Affan Khan, your first ever dealshaker certified trainer and the GLG member from Pakistan. And yes, guys, I'm the oneacademy expert as well. Guys, I'm back and finally we have got exchange summary part 12. And to be honest with you, I really like this exchange summary because in this summary I've been able to find out many things which for sure it's grateful, right? So let's come to the main point. The first part would be in English and the second part would be in Urdu. So guys, I have concluded 7 points. This is what I have been able to find out from this exchange summary. So let's start the main show. And guys, let's move on to point number 1, which is that ongoing work to set limit on exchange liquidity, right? So guys, there is a ongoing routine to maintain you can say a limit on the exchange liquidity for sure. For this moment, people have been waiting for a long time. I mean, people have been waiting for last 4 or 5 years. They have joined OneLife in 2014 or 15, and they have been waiting for the liquidity, right? So for sure, it's not possible for everyone to liquidate their whole coins in just one day. We all are aware of this situation. So for sure, there is gonna be some limit. So let's see what's gonna be that limit. For sure, compliance is gonna tell us. And let's move on to point number 2, which is that the full demo access of exchange and video has been sent out to the authorities. It seems very much great that the compliance is doing and the exchange company is trying their level best to get the approval as soon as possible to run the exchange, right? So for sure, we have got as you can see that the exchange company has sent a full demo and the full access of the exchange to the authorities, and it seems very much great. All we have to do is just to wait for the approval from the central bank, right? Let's move on to point number 3. I'm gonna be very much straight, guys. Point number 3 says that NBI, National Investigation Bureau, issued a clearance certificate. Guys, can you imagine that this clearance certificate is for the exchange summary? That National Investigation Bureau has issued a clearance certificate for sure for exchange company, right? So it seems very much great, and for sure it's a big news that they are getting those certifications and their clearance certificate for their work, and it seems phenomenal, guys. So let's move on to point number 4, which says that police certificate has also been received by the central bank, and now the meeting will be scheduled. This is what I have been able to this is for I'm waiting for a lot for this moment, because I want to see the meeting of central bank and the exchange company, where exchange company is gonna tell their scope of work. The exchange companies tell them their list of cryptocurrencies which are gonna be traded on the exchange, right? So it seems great, and I'm very much hopeful and I'm very much positive with having a positive approach. So let's see which way the wind blows, guys. And let's move out to point number 5, which says, this is the main point, guys. Listen it carefully. That if the central bank meeting goes smooth, then for sure one will be approved, guys. One will be approved. The exchange company will get a go ahead to run the exchange, guys. If that meeting goes smooth, for sure. Listen carefully. If that meeting goes smooth, for sure they are going to get a go ahead, and the one will be approved, and then for sure they will get a license. It must be temporary or permanent, but for sure they are going to get the license to run the exchange. And to me, it's a big news that they are trying their level best to get approved as soon as possible. So let's move on to point number 6, which says, and this point is from the compliance section in this PDF. I'm not gonna open it as we all have got this PDF file, right? Point number 6 says that a meeting with bank will take place next week to set a bank account. For sure, they are willing to open a bank account for the exchange company, right? So for sure, this bank account is beyond our imaginations, right? So let's move on to point number 7, which says, now guys, this is one of the best point from this exchange summary part 12, and I'm sure you guys are gonna love it. A bet on it. They are waiting for an exact date for an interview with the relevant authorities. Expected feedback in the middle of August for the approval of one to be traded on exchange, guys. I believe it's my prediction
and it is already mentioned in exchange as well that in the mid of August might possible we are going to have approval to run the exchange, and it seems phenomenal, guys. I cannot imagine. For this moment we have been waiting for a long time, and finally we have got this moment that I believe in the middle of August, we are going to have approval to run the exchange. Again, we haven't got the exact date then on what date we are going to have the exchange, but for sure we have got a big prediction. Might possible it is gonna be August, as it is written on the exchange summary. I'm not saying anything from my side. It is already mentioned in the exchange summary, right? So I believe these things are gonna be very much great. And guys, that is all I got from my side. As I told you before, I'm gonna be very much straight, and I hope that you are gonna like this video. And if this video helps you, then go ahead and like and subscribe and share it with everyone, and do subscribe it. Thank you so much, guys. It's Affan Khan, your first ever dealshaker certified trainer and the GLG member from Pakistan. Thank you. Assalamu alaikum everyone, मैं अफान आपका dealshaker certified trainer और GLG member पाकिस्तान से, और मैं dealshaker पाकिस्तान का सब franchise manager भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। So guys, जैसा कि आपको पता है कि हमें एक्सचेंज समरी आज मिल चुकी है, कल मिल चुकी है, सॉरी मैं थोड़ा सा लेट वीडियो बना रहा हूँ, मैं काफ़ी बिजी था। एक्सचेंज समरी पार्ट 12, मैंने इसमें से कुछ 7 पॉइंट्स कंक्लूड किए हैं जो मैं अब तक इसमें से ढूंढ सका हूँ। बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं ये, और मैं इसको आपसे डिस्कस करूँगा। सो पहला पॉइंट जो है वो यही है कि अभी एक्सचेंज पे जो लिमिट लगाने के लिए पूरा भी प्लान अभी सेटअप हो रहा है। और शो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है गाइस कि एक दिन के अंदर लोग अपने सारे कॉइन्स को सेल आउट कर सकें और लिक्विडिटी हासिल करें, ऐसा नहीं है। फॉर श्योर ये वन इकोसिस्टम के रिस्पेक्टिव वे में भी होगा काम, कि उस पर लिमिट सेट की जाएगी ताकि वन कौन का जो इकोसिस्टम है, वन इकोसिस्टम वो बिल्कुल स्टेबल रहे और मेंटेन रहे। सेकंड पॉइंट जो है वो ये है कि अभी बिल्कुल एक्सचेंज समरी जो एक्सचेंज का पूरा फुल डेमो एक्सेस और पूरी इसकी वीडियो अथॉरिटीज़ को सेंड कर दी गई है, ताकि उनको जल्द से जल्द सेंट्रल बैंक से मीटिंग का मौका मिले जहाँ पे वो लोग अप्रूवल ले सकें। सो ये काफ़ी अच्छी एक मेरी नज़र में प्रोग्रेस हो रही है एक्सचेंज कंपनी की तरफ से। द थर्ड पॉइंट इज़ कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने अभी एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट इशू किया है एक्सचेंज कंपनी के लिए, नॉट वन कॉइन, इट्स एक्सचेंज कंपनी विच इज़ गना रन द एक्सचेंज, राइट। सो ये मेरी नज़र में काफ़ी बड़ी बात है कि इन लोगों को इस तरह से क्या कहते हैं क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं, क्लियरेंस मिली हर जगह से, एंड आई एम श्योर बहुत जल्द ये एक्सचेंज अच्छे तरीके से रन करेगी, काफ़ी हद तक स्टेबल भी होगी। आई बिलीव इट्स माई प्रेयर। एंड पॉइंट नंबर 4 इज़ कि पुलिस सर्टिफिकेट है जो है वो भी सेंट्रल बैंक को रिसीव हो चुका है, और नेक्स्ट वीक और या तो जल्द से जल्द सेंट्रल बैंक की मीटिंग अब एक्सपेक्टेड है। जब तक ये मीटिंग नहीं होती फॉर श्योर जब तक अप्रूवल नहीं आएगा। सो लेट्स सी विच वे द विंड ब्लोज। पॉइंट नंबर 5 विच सेइज कि अगर सेंट्रल बैंक की मीटिंग अच्छी होती है, मींस कि थोड़े मतलब कि स्मूथ जाती है और सारी चीज़ें सही रहती हैं, तो फॉर श्योर इन लोगों को एक गो अहेड मिल जाएगा और वन जो है वो अप्रूव्ड हो जाएगा, और उन लोगों को एक टेम्प्रेरी यहाँ पे परमानेंट लाइसेंस मिल जाएगा एक्सचेंज को रन करने के लिए। तो मेरी नज़र में एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि हम इस हद तक भी आ चुके हैं आगे, और हम बहुत क्लोज हैं एक्सचेंज से। सो देखते हैं क्या होता है। पॉइंट नंबर 6 जो है वो कंप्लाइंस सेक्शन से रिलेटेड है कि अभी एक मीटिंग होने वाली है बैंक से, क्योंकि एक्सचेंज कंपनी को अपना एक बैंक अकाउंट भी ओपन करना पड़ेगा टू रन द एक्सचेंज, टू गेट द लिक्विडिटी। सो अभी ये भी मीटिंग एक्सपेक्टेड है, और नेक्स्ट वीक में इसको लिखा गया है एक्सचेंज समरी के अंदर कि एक्सपेक्टेड। सो लेट्स सी व्हिच वे द विंड ब्लोज। पॉइंट नंबर 7, माय लास्ट पॉइंट और सबसे बेहतरीन किस्म का पॉइंट इस एक्सचेंज समरी के अंदर जो मुझे अच्छा लगा कि अभी एक्सचेंज समरी एक इंटरव्यू के लिए वेट करी कुछ रेलिवेंट अथॉरिटीज़ के लिए, जिसमें जो फीडबैक जो एक्सपेक्टेड है वो मिडिल ऑफ अगस्त में है, मतलब कि अगस्त के मिड में, यू कैन से 15 अगस्त और 20 अगस्त, जिसमें अप्रूवल एक्सपेक्टेड है वन का ट्रेड होने के लिए एक्सचेंज पे। सो आई बिलीव ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि इतनी बड़ी एक हैंड दे दी गई है, इतनी बड़ी प्रेडिक्शन दे दी गई है कि अगस्त के अंदर एक्सपेक्टेड है कि अप्रूवल आ जाए। गाइस अब हमें इस चीज़ को थोड़ा सही से समझना पड़ेगा। अप्रूवल का मतलब क्या, कि अप्रूवल के दिन ही एक्सचेंज स्टार्ट हो जाए, ऐसा नहीं है। माइट पॉसिबल इट विल टेक सम टाइम, बट अगेन अप्रूवल इज़ द मेन थिंग।
वी ऑल नो दैट 2019 इज़ द ईयर ऑफ एक्सचेंज. बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये 2020 या 21 तक जाएगी, बट आई डोंट थिंक सो, बिकॉज they will for sure complete their demands which they have said on that official newsletter, right? So अब देखते हैं क्या होता है. फॉर श्योर एक बहुत बड़ी हिंट मिल चुकी है कि अगस्त के मिड के अंदर अप्रूवल एक्सपेक्टेड है वन का, और अगर जैसी वो अप्रूवल आता है तो फॉर श्योर एक्सचेंज भी स्टार्ट हो जाएगी. सो देखते हैं क्या होता है. दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन एबल टू फाइंड आउट फ्रॉम दिस एक्सचेंज समरी पार्ट 12. तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको जितना हो सके शेयर करें, ताकि जो एक नेगेटिविटी है, और मैं ये ज़रूर मेंशन करूँगा कि बहुत मिथ है और एक बहुत मिसलीडिंग चल रही है यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर्स की तरफ से, कि वो अनएक्सपेक्टेड वे में विदाउट एनी लॉजिक वो एक बात कर रहे होते हैं जिस पे लोग बिलीव कर रहे हैं. सो आई डोंट थिंक सो दैट यू गाइस शुड फॉलो देम. प्लीज़ फॉलो द कंप्लायंस. मैं यही कहूँगा, आप प्लीज़ फॉलो कंप्लायंस को फॉलो करें, एंड स्पेशली फॉलो द GLG members as well, because they are the one who are getting the exchange, they are getting the news directly from the company, right? So उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर अच्छी लगे तो ज़रूर इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह ताला फिर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँगा. एंड येस, मैं भी आपका थोड़ा सा वोटिंग सिस्टम भी लेने वाला हूँ डील शेकर की वीडियो के हवाले से, क्योंकि मैं एक बहुत बेहतरीन किस्म का ट्यूटोरियल बनाने वाला हूँ डील शेकर के लिए, डील शेकर पाकिस्तान के लिए, कि लोग कैसे डील शेकर पे काम कर सकते हैं, डील शेकर है क्या, कैसे काम होगा, किस तरीके से मर्चेंट प्रोफाइल बनेगी, और किस तरीके से डील्स अप्रूव होंगी, किस तरीके से लोगों को लिक्विडिटी मिलेगी. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. सो मैं सारी चीज़ों को डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह ताला. तो गाइज़, थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए. सो थैंक यू सो मच गाइज़. अल्लाह हाफिज़.